So chapter accounting equation you all are knowing. Almost we have finished. So again we are going to revise this chapter today. Assets, liabilities, and capital. It is known as accounting equation. Means this is the situation. Our total assets must be is equal to total of liabilities and capital by passing each and every transaction, whatever we are doing business or we are doing transactions, whatever amount we are receiving and putting into the accounting equation, it should be our total asset must be equal to total of liability and capital. Means if we are increasing this side, so obviously this side also will increase with the same amount. Suppose that if we are decreasing this side, so also our liability plus capital, any of the item will decrease by the same amount. But suppose that one item is increasing in asset side, but in liability side there is no effect. So this means another item will decrease in the asset side with the same amount. This means our equation must be equal. Total assets must be equal to total of liability and capital. Suppose that if we are adding any item here only and it does not affect on our asset side, so another item will decrease in the same side. So anyhow our total of asset must be equal to total of liability and capital, right? So another thing, this is the formula LHS is equal to RHS, you all are knowing, okay, very well. But when in the question it is being said to calculate the capital, suppose that liabilities and assets are given and you are supposed to calculate capital. So how will you calculate? See here. So capital is equal to assets minus liabilities. Okay. So देखो assets को हम short में A, L और C भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे L plus C capital. So ये हो गया कैपिटल का फॉर्मूला. अब हमें लायबिलिटीज अगर फाइंड करना है, L, so A minus C, this is the formula. If we want to calculate assets, so L plus C. So you all are knowing this is the equation, so you can frame any other equation by transposing each item to another side. LHS must be equal to RHS. Okay, students. You can take the screenshot whenever you are unable to write. So 2 student has left. Just I'll check the letter on. Maybe the new. Okay, so students note it down. Take the screenshot of the question. What I'm sharing. Okay, so just note it down. You can take the screenshot. Just I'm showing. Yes. So here question number 13. Let me check question number 12. From question number 12. So student, from question number 12, you take the screenshot of question number 14. From 12 to 14. Just take the screenshot. Who has taken the screenshot, they can show the they can react in emojis. जो लोग स्क्रीनशॉट ले चुके हैं वो इमोजी से यस बेटा आगे सॉरी I'm not getting your voice. You write in chat box beta, you write in chat box. I'm not getting your voice clearly. Write in chat box. Just now I'm understood. Are you writing in chat box? Okay. Okay, students, I understood. So this means earlier you were not getting the screen properly, na? Okay, so take the screenshot of question number 12, 13, and 14. I will solve here. First, I'll explain the question number 12. One by one, I'll be solving, and you also will solve at your notebook.
So before joining the class, you must have arranged your notebook and pen so that you can also solve. So students, just now I am going to read the question number 12. Hello. सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। Yes, now it is okay. It is okay now. Am I audible? Yes. Yes. So now again I am going to start. My mic was mute I think at that time. So mute your mics, you all people. Mute your mic and just listen it. Okay. So Ram commenced business on 1st January 2019 with a capital of rupees 60,000. So Ram is the owner. Is going to start business by investing rupees 60,000. This 60,000 will be known as the opening capital. At the end of the year, means after 12 months, his assets were worth rupees 1,10,000. This means what? This is the closing assets. And the liabilities were rupees 40,000. Right? So opening capital is given in the question, and but closing assets and closing liabilities are given here. Find his capital at the end of the year and profit earned. So students, I have taught all these things earlier in the previous classes, but even I am going to solve. So you all are knowing that in this question, closing assets is 1,10,000 and liabilities is 40,000. Okay. So now I am going to stop the share and see. So closing asset is 1,10,000. Okay, and liabilities are given closing 40,000, but you have to find closing capital. So as you know that the capital is equal to assets minus liability, because capital we have to find, तो liability को उठाकर इस साइड लाएंगे. So 1,10,000 minus 40,000, isn't it is given in the question. So now subtract, you will find capital. So how much? 70,000. Yes, of course the closing capital is 70,000. Means at the end of the year asset is given, at the end of the year liabilities is given. So at the end of the year capital will be how much? 70,000, because we have applied the formula assets minus liabilities. Right? यहाँ तक हो गया. अब इसके बाद कह रहा है कि find the profit earned during the year. So you all are knowing, जब भी कभी profit होता है तो किसको मिलता है? Who takes the profit? Owner. And this is what? Owner's capital, owner's fund. तो जब भी प्रॉफिट होगा वो कैपिटल में इंक्लूड होता है. तो दिस मींस कि हमारा जो क्लोजिंग कैपिटल है नाउ इट इज 70,000. इट मींस कि हमारा कैपिटल में क्या है? 70,000. क्यों हुआ? प्रॉफिट होने की वजह से हुआ होगा. ठीक है. सो कैसे पता करेंगे प्रॉफिट? तो प्रॉफिट का फॉर्मूला है, नोट इट डाउन, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल minus opening capital. Profit is equal to closing capital minus opening capital, right? Is there anyone want to ask? Sir, आपकी voice नहीं आ रही. Okay, but our voice will be coming. Don't complain for the voice because it is due to network. So closing capital minus opening capital will be the profit. When the situation when your closing capital is more than opening capital, this is the reason why you will earn the profit. So your closing capital you have calculated 70,000. Yes, this
is the closing capital. What you have calculated, and opening capital is given in the question. How much? 60,000. Opening capital is given in the question 60,000. So your profit will be 10,000, right? This will be profit. So students, I hope you have understood properly. First in the question, closing assets are given, means at the end of the assets are given, at the end of the liabilities are given, and you are supposed to calculate at the end of capital. So capital will be assets minus liability. So asset is 1,10,000, liability is 40,000, the closing capital will be 70,000, right? So now after that, profit is equal to closing capital minus opening capital, right? So profit के लिए करना क्या है? Closing capital हमने find किया 70,000 और opening is given in the question itself 60,000 in the very first line. ठीक है? तो आप लोग ध्यान दो उसको कि कैसे मतलब यह होना है. Okay, students. So I hope you have understood. Now you tell opening capital. At the end of the year और एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, क्या डिफरेंस है दोनों में? ईयर का ओपनिंग कौन होता है और एंड क्या होता है? ईयर का ओपनिंग क्या होता है? जैसे इसमें 1 जनवरी दिया हुआ है, तो ये क्या है? ओपनिंग है या क्लोजिंग है? ओपनिंग है. यस सर. और एंड ऑफ द ईयर क्या होगा? एंड ऑफ द ईयर सर मतलब कि जब वो खत्म हुआ क्लोजिंग. सिंपल वर्ड में बताओ. क्लोजिंग ईयर क्लोजिंग होता है ना? तो क्या बोल रहा है yes, इसमें लास्ट टाइम? फाइंड हिज कैपिटल एट द एंड फाइंड द एंड ऑफ द हाँ कैपिटल ऑफ. एंड मींस क्या हुआ? क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करने की बात कर रहा है. समझ में आया? यस सर. हाँ, तो अब सेकेंड लाइन पढ़ो. इसमें क्या लिखा है देखो. एट द एंड ऑफ द ईयर मींस क्लोजिंग हिज एसेट्स, यानी क्लोजिंग एसेट्स एट द एंड ऑफ द ईयर जो उसकी एसेट्स है 1,10,000 की है एंड लायबिलिटीज जो है वो 40,000 की है, राइट? 40,000. सो ये क्या हुआ तुम्हारा? क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग लायबिलिटी हुआ ना? यस सर. सो देखो मैंने फॉर्मूला में क्या लिखा है. क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू क्या होगा? एसेट माइनस लायबिलिटी. एसेट माइनस लायबिलिटी. So closing asset is 1,10,000 and closing liabilities are given 40,000. Then minus करोगे तो you will get 70,000. This will be closing capital. See the answer is given in screen. See answer is given capital 70,000. दिया है ना? यस. अब क्या पूछ रहा है? प्रॉफिट फाइंड करने के लिए. तो प्रॉफिट का फार्मूला मैंने बोर्ड पे लिखा है, दिख रहा है कहीं? हाँ सर. क्या लिखा है? पढ़ के बताओ. प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल. यस. तो क्लोजिंग कैपिटल कितना भी तुमने फाइंड किया? सर क्लोजिंग कैपिटल अभी भी फाइंड किया है ना तुमने? यस सर. 1,10,000. अरे बेवकूफ, वो एसेट्स है. कैपिटल कितना फाइंड किया? सर 40,000. 40,000 लायबिलिटी है. अभी देखो यहाँ लिखा है कि नहीं? नो सर. नो सर. हाँ सर. 70,000. यस. सॉरी सर. 70,000. और इस क्वेश्चन में स्क्रीन पे पढ़ो. फर्स्ट लाइन में लास्ट में कितना कैपिटल दिया है 1 जनवरी को? रीड ऑन द स्क्रीन. जो शेयर मैंने किया है दिख रहा है फर्स्ट लाइन में? यस सर. कितना है? 60,000. ये 1 जनवरी को है तो ओपनिंग कैपिटल हो गया. सो अप्लाई करो, पुट कर दो वैल्यू. क्लोजिंग कैपिटल 70, ओपनिंग कैपिटल 60, यू विल गेट 10,000 प्रॉफिट. आ जाएगा? आंसर चेक करो. आंसर में दिया ना प्रॉफिट 10,000. आप समझ में आया? हाँ सर. So in question number 13, it is saying X started a business on 1st April. Here the opening date is what? 1st April. Then closing date क्या होगा? 31st March. Right? So आप लिखोगे X started business on 1st April 2019 with the capital of rupees 1,20,000. यहाँ पर opening capital कितना हो गया? 1,20,000. And he took a bank loan of rupees 40,000 on the same day.
1 अप्रैल को ही उसने क्या किया, 30,000 40,000 रुपीज का लोन लिया. दिस इज व्हाट लायबिलिटी. 1,20,000 इज ओपनिंग कैपिटल एंड ओपनिंग लायबिलिटी इज 40,000. और ये लायबिलिटी आपका जब तक पेमेंट नहीं होगा वो एज इट इज पड़ा रहेगा. ऑन 31st March 2020 मींस क्लोजिंग डेट की बात कर रहे हैं, ध्यान रखो. His assets were rupees 2,40,000 and creditors were rupees 30,000, right? तो इनकी क्लोजिंग एसेट्स है 2,40,000 और क्रेडिटर मींस 30,000 है. लोन हैज नॉट बीन पेड सो फार. बोल रहा है लोन अभी तक पेमेंट नहीं किया, यानी जो ओपनिंग लोन था 40,000 का बैंक का वो क्लोजिंग लोन में अब कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ईयर के लास्ट में भी वो लोन एज इट इज है. तो 2,40,000 रुपए का क्लोजिंग एसेट्स हो गया. लायबिलिटीज में हो जाएगा क्रेडिटर प्लस लोन, क्योंकि क्रेडिटर तो हमने गुड्स उधार खरीदा 30,000 का, लेकिन जो लोन था वो अभी तक पेमेंट नहीं किया, तो वो भी क्लोजिंग हो गया. कह रहा है determine his capital at the end of the year and profit earned. So students, you know that पहले as you know the formula क्या होगा, assets is equal to liability plus capital, and you are supposed to calculate capital at the end. It means आप क्या लिखोगे, closing assets means assets at the end of the year minus liabilities. liabilities में दो चीजें हैं इस क्वेश्चन में, creditor and bank loan. So 2,40,000 में से 30,000 और प्लस 40 70,000 रुपया माइनस करेंगे 70,000. So you will be getting 1,70,000. तो बैलेंस होगा 1,70,000. This is called closing capital. I hope you understood. So start doing. बताइए आप लोग में से किसी को कोई दिक्कत सिद्धि? Siddhi's voice is not coming. Her voice is not coming. लोग का माइक्रोफोन खराब है. ओके बाकी लोग हाँ कीजिए, आप लोग फटाफट कीजिए. जो कर लेगा अनम्यूट करके हमें बताएगा. Now I'm going to end the class or do practice more and more at home.